South of Odisha Public Library Initiative. We are in the conference room 2 in the OSA Convention. Okay. So we are about to start. And I would like to request Nishikanta to make his presentation to the audience. Thank you. Prior to that, Ajay Bhai and Nishikant Bhai, I'm muting everyone. Only the speaker will allow to unmute. So you can unmute and go ahead, Nishikant Bhai. Okay, my presentation. Right, go ahead. समस्तु नमस्कार माइक्रोफोन किसी यांत्रिक त्रुटि अच्छी हमें आपन सुनी पारुनो निशिकांत भाई समस्त श्रोता एवं दर्शक क्षमा मांगने किसी यांत्रिक त्रुटि अच्छी हमें अति शीघ्र आरंभ करिवो प्रशांत भाई again can you unmute the room room okay we are looking for the conference ALN CONF conference yes CONF kana say room tagi उत्कल भाई को रूम टाको अनम्यूट करबी which id ALN do you see a conference room ALN let me go ALN Ajay, no I don't see any room ALN Can you unmute CONF I am seeing one okay, can you unmute okay I did it okay Durga bhai okay okay perfect Can you hear us? yeah good Okay, that's good. let's go ahead okay fine everything fine Light ta kon holo kotiela? light okay you will just speak to the microphone how kichhi setting yeah we are good to go Nishikant bhai we are good to go yes go ahead
ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସୋସାଇଟିର 53ତମ ଅଧିବେଶନ ସାକ୍ରାମେଣ୍ଟୋ ସହର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଆପଣ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି ଅବଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତରଫରୁ ଆମେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆମର ମନୋଜ ମିଶ୍ରଜୀ ଆମର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। अश्विनी कुमार पात्र जी, मधुसूदन पाढ़ी एम को एवं आमर अमेरिकार कर्मकर्ता मान एवं श्री अशोक मीना जी ओडिशा सोसाइटी आपण मानकर सहयोग एवं समर्थन पे बहुत कृतज्ञ। बेसिकली तीनटा जिनस मुझे गोटे जिनस आम मैंने बहुत खुशी जे आमर रिलीफ फंड चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को जो पैसा जाइला से पैसा रु 50 लाख टंका जाउची जो मो स्कूल जो थी कि लाइब्रेरी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी काम हो पार भुवनेश्वर ओडिशा रे सेटा होची बेस्ट भल खबर आमर ऑर्गेनाइजेशन पे। ता सहित मालकानगिरी मध्य जोरे चली मोमेंटम इज गोइंग ऑन केमती सेटे गोटे डिजिटल लाइब्रेरी करा जिवो। आमर निशिकांत अजय बाबू एवं अन्यान्य कर्मकर्ता माने बेस्ट आपण मान सहित निबिड़ सहयोग काम कर चलती से ऑर्गेनाइजेशन बहुत कृतज्ञ। लाइब्रेरी ब्रह्मपुर लाइब्रेरी काम से गेनिंग मोमेंटम यही सब काम पे आमे आपण मान पाखे बहुत आभारी। बेसी समय नेबिनी एवं बर्तमान नेक्स्ट कार्यक्रम करने समस्त अनुरोध करी। नमस्कार। Thank you, Ganababu. I think we should start with a brief presentation by Nishikanta. Please share कर दो। Yeah, namaskar. Good morning, USA. Good evening, India. Thank you for attending, and I would like to welcome Honorable Minister Sri Patra and Madhusudan Padhi, our Secretary, Culture Department. They are completely new to this department, and I welcome them. And Mr. Ashok Meena, thank you for helping OSA in the past. We really appreciate your help because of you we got that redirection of Chief Minister's Relief Fund to the rural libraries in Mayurbhanj and Baleshwar, and that is under Engineering scheme, and that is promising, and that has huge potential, and that can scale in Odisha, that can scale in India also. I really appreciate your help, and I must thank you on behalf of OSA and all the NROs. And I would like to welcome Manoj Mishra, Secretary IT. Thank you for attending. And today's topic is Odisha Public Library Vision 2024. Am I here audible to everybody? Yeah. Go ahead. Okay. Thank you. Because this 2024 is not too far, but this can be accomplished because this is doable, and this we need to understand why it can be accomplished and what is the need. I think this is very important topic, and this year we are celebrating 75 years of Indian independence, and this is as a citizen of Odisha, as a people of Odisha from Odisha root, as the administrators, we all need to accomplish how we can achieve this vision 2024 and realize this 75 years of Indian independence. Next slide, please.
But before we get into this Vision 2024 at high level, because we have very little time, that's why I want to say at high level what exactly what we are looking forward. We need to have internet-enabled public libraries in every panchayat and every district level. And this is not something new, because Odisha has this Public Library Act in 2021, sorry, 2001, and it has been 20 years. And in 2016, Honorable CM passed this rules notification. On top of that, in 2018, we have also CM allocated funds for public libraries. In 2018, the PI department sent circulars to all district headquarters, all the videos in the entire state, to build edutainment centers from public libraries. On top of that, we have 5T scheme, and this has a very powerful vision of STMCM that has the potential to get it done in no time, because we have seen on the 5T scheme, 5T transformation schools, high school transformations happened even during the COVID. In 6-7 months, we had lots of libraries, lots of high schools have been transformed. Then why not public libraries when we have the rules developed in 2001? And why we don't need, why it has a high priority? I would like to show these ones. As you can see from the sustainable goals as per United Nations, they claim all the SDGs, development goals, needs to be achieved through public libraries. On the right hand side, as you can see, in the US, like we are conducting this seminar in California, and San Francisco is in California, and this is what you see in California. They invest every dollar, they have a return of $5 to $9. Think about if Odisha government will invest in public libraries, the kind of return they can get in terms of the value, like the induced benefits to the people. And this is actually, we are behind 150 years, 150 years behind than America, because the public library systems have been developed in America 150 years back. And we need to expedite this thing to happen. Secondly, we can have world-class hockey stadium in no time, and we have our government is getting credit to have excellent performance in conducting the cyclone rehabilitations. And there are so many things. Government has done excellent job. Why not the public libraries? And we, as the general citizen, we like to see how we can do a better job on this one. As you can see here, in Kerala, they have performed wonderful in SDG implementation. But Odisha is number 2 at the same time. If you analyze, Kerala has top priority in the public libraries, as you can see here. This is the picture you can see. Even after the flood, they have top priorities on public libraries. And not only Kerala, you can see this one, Karnataka and other states. Karnataka has all the panchayats, they have internet-enabled libraries. Haryana, they have also the same thing. Their CM recent approved to support libraries in all over Haryana. And we have wonderful news in Jharkhand also. And even the COVID time, they developed they completed one district to have all the libraries. That is huge potential. If you still believe that libraries are not impactful, this is one example. As you can see, STMCM inaugurated OSA's public library in Bahampur. It started with 0 members. Now,
As you can see, recently we have Durga Prasad Adhikari who got IAS using that library. You can see that video. We are getting consistent demand from the students to open the library just after the COVID. We are getting consistent demand to open the library, to increase the library hours in the morning, in the evening. They demand to add more books, more tables, more space. As you can see the tweet message from Municipality Commissioner Dharampur, they have added 250, they have added new building because of the demand. That's why we need to see what kind of service the library can provide to excel in the world, because it has been successful all over the world. Why not in Odisha? And this is the best investment for Odisha that we need to focus on. And we have recently conducted the survey. As you can see the response, we have 1,000 people participated in the survey. And this is their response, and all are interested. And this is something we need to think about. As I mentioned, we have 2016 Honorable Minister CM had this on the cabinet meeting. They have approved the library rules. In 2018, we had the budget, and we have this Panchayat Raj notification to all the videos. Then we need to discuss our next action plans from our esteemed guest, and to discuss on this thing. Now I'd like to hand over to Dr. Ajay Mahanti. Thank you. Thank you, Nishikanta. The most important thing here is that there is an initiative going on at the moment, and Odisha government is on the job to establish district headquarter level library in every district. There's 30 districts, and there is a plan for building the library in every block and panchayat. It needs to be implemented, and the job, the responsibility or the initiative that we have taken is to facilitate that. Our job is to facilitate this. And we have invited 3 4-minute guests. Mr. Manoj Mishra, IT Secretary, Mr. Madhusudan Pari, Culture Secretary, one of the representatives, Mr. Panigrahi from Culture Department, Ashwini Patros Department, and the Panchayat Raj Secretary, Ashok Meena. Is he joining? Yeah. Okay. So I would like to request Mr. Madhusudan Pari. Kindly unmute, sir. Mr. Madhusudan, sir. Please unmute. No. Okay. Yeah. Mr. Hello. Okay. Good morning to everyone in USA, and good evening to those in Odisha. Namaskar. एठी आपण जो पब्लिक लाइब्रेरी कथा कहिले, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट होची हमर पास हेची 2000 एक्ट होची 2001 रो, किंतु नोटिफिकेशन हेची 2002 रे, किंतु ताकू इम्प्लीमेंटेशन करिया पई हमर रूल्स ता जो तयार हैला सेटा 2016 ले तयार हेची, एवं ता पर मध्ये विशेष किछि काम हेई नै, नॉट मच ऑन दैट, प्राइमरली बिकॉज वर्तमान भी आपण भी प्रेजेंटेशन में देखेले जे विभिन्न विभाग रे विभिन्न लाइब्रेरी मान रही जिला स्तर रे, एवं विशेष करी आईएनपीआर रो सब डिविजनल स्तर रे भी लाइब्रेरी रही, एवं कल्चर डिपार्टमेंट अंडर रे गंजाम जिले रे पूर्वरु लाइब्रेरी 7टा लाइब्रेरी चलची। सो एई भली बहुत गुडे लाइब्रेरी अछि जाकू एकत्रीकरण करबा आवश्यक होची। वर्तमान से ऊपर चर्चा चलची, से सब लाइब्रेरी
गोटे डिपार्टमेंट मेंटेन करिवो एवं किंतु जो आशा आमर निशिकांत बाबू कहले जे प्रति पंचायत रे आमर इंटरनेट सपोर्टेड लाइब्रेरी रहिबो एवं सेठी समस्ते ताकू उपभोग करि परिबे एवं तार व्यवहार करि परिबे सेटा टिके टाइम लागि पारे कारण सब पंचायत रे जदियो इंटरनेट किछि ये पहुंची जो भली स्पीड दरकार लाइब्रेरी रो से माने डाउनलोड करिया पई बा ये करिया पई से बड़ी बद नाही तापरे द्वितीय रे गोटे जिला स्तर रे जो लाइब्रेरी अछि बा सब डिवीजन स्तर रे जो लाइब्रेरी अछि से उडको जदी ठीक भाव रे फंक्शन करू नाही ताहले आमे पंचायत स्तर रे को चलेबा केमति मैनेज केमति करबा लाइब्रेरी करि देले हबनी ताकू मैनेज करबा तार गोटे मैनेजमेंट प्लान रहबा दरकार जा फल रे एटा को आमे दीर्घस्थायी सस्टेनेबल करि परिबा एवं आपनकर देश रे अमेरिका रे बा कनाडा रे सब शहर रे गोटे गोटे पब्लिक लाइब्रेरी अछि गोटे अधिक अछि एकाधिक अछि एवं सब पब्लिक लाइब्रेरी रे विभिन्न सेक्शन अछि एवं पिला मानक पई सेक्शन बॉयस्कन पई सेक्शन नॉर्मल एडल्ट पई सेक्शन सिटीजन मेंबर हे परिबो से शहर रो एवं सेही म्युनिसिपैलिटी बा जो अर्बन लोकल बॉडी तार होची दायित्व नौजंती एठी किंतु हमर जो रूल हेची मु देखुची सबुडाक इट इज ए स्टेट सेंट्रिक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक तेणु ए भली चलेले एमटा गवर्नमेंट स्कीम भाबरे चलिबो विशेष करी मु भाबुची एथि टिके परिवर्तन होवा दरकार हमकू म्युनिसिपैलिटी यूएलबी बा पंचायत समिति जो मानकर रिसोर्सेस अच्छी जो मानकर मैन पावर अच्छी बा आमे तांको मैन पावर पई सपोर्ट दे परिबा तांको जदी दे परिबा ताले को सस्टेनेबल मेंटेनेंस हे परिबो इवन हमर जो एक्जिस्टिंग लाइब्रेरीज अच्छी सेथरे भी बहुत शॉर्टेज ऑफ मैन पावर अच्छी यदि ताको आमे निकट भविष्य रे पूर्ण करिया पई चेष्टा करिछु तेनु ए सब एते मु वर्तमान कहबी आ पर किछि आसले आई रेस्पोंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी Thank you, sir. Now, Ajay bhai, you have to unmute Ajay bhai. Oh, thank you. Thank you, Mr. Padi. Why is it? It's echoing, Prasanta. So you have to stay muted, and in the other tone you have to say. I think Utkal bhai will say that. Yeah. Now can you hear me? I have unmute. Please unmute this conference ID. Hello. Yeah. Can you hear me? Yeah. Now we can hear you. Okay. Thank you, Mr. Padi. It was wonderful to have your address to the audience. And we know that the district library is not functioning in all 30 districts. That is one of the top priority of your department. And we had met the previous culture minister 2-3 years ago. And there is continuing effort. And here the former education minister said that in Nayagarh district, they will have a new library. I am from Jagatsinghpur district where the library has started. So there are many districts where the initiative for the library has started. And, we hope first in the next 2 years or so, all 30 district libraries will be functioning. Thank you. With that, we will move to the next speaker. Mr. Ashwini Patra, Minister of Culture, is he there?
Let me check. If you are there, please kindly address, because I thought he came in. Okay, Manoj Mishra sir is there. Ashwini Not there? not there. Manoj sir is there. I think I'm going to request Mr. Manoj. नमस्कार Hello, ke कहउछन देगा? Manoj Mishra, sir? Hello? can you Yeah, we can hear Can you you, sir. hear me? Yeah, Manoj sir is speaking. Okay. Manoj Mishra is the Secretary of IT. Under his leadership, Odisha has made a great strides. There are only a few hundred villages or few panchayats we are yet to be connected, but he has made tremendous contribution with the statewide network to every block and panchayat in the state where the government services can be provided. The libraries will be also connected with this wide area the broadband connection. And I really commend Mr. Mishra for your effort. And he's a dynamic leader. And I would like to request your address, sir. Thank you. Thank you so much, Ajay Babu. It is a privilege to be called to this forum where we connect with all ODIAs, like-minded, and also ame ekka bhaliya chintadhara rakhu. बहुत खुशी लगे आपण फोरम को आसले from Bhubaneswar to I think USA. We are all one. रथ यात्रा जस्ट सरीची तेणु रथ यात्रा पई आपण मानक समस्त को मोर शुभेच्छा जय जगन्नाथ मो इंट्रोडक्शन रे अजय बाबू टिके he is very kind, so he is kind and he comes with a lot of wisdom, so he says a lot of things. I have only tried to be a small Gundichi Musa in the whole big scheme of things, and that scheme of things which I think from 2019 onwards has been really big in terms of adopting technology. टेक्नोलोजी एडॉप्शन करिवारे आम राज्य वर्तमान आपण देखिबे सारा भारत वर्ष रे बहु जगह रे हमको रिकॉग्निशन मिलछि जे आमे बहुत अग्रणी भाबरे अछि सेटा पब्लिक सर्विस हो ना कहीं कि इवन वेबसाइट डिजाइन रे आमे वर्तमान जस्ट लास्ट गत मास रे हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ रु वी हैव बीन रैंक्ड एज नंबर 1 इन द कंट्री. आमर प्रयास रही जे केमिति डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टा बढ़िया पे कारण आम राज्य रे आपण मन समझ जानते गोटे गोटे बड़ डिवाइड अछि. डिजिटल डिवाइड टा गोटे फिजिकल डिवाइड अछि जोथि पे डिजिटल डिवाइड अछि. वेस्टर्न ओडिशा, साउदर्न ओडिशा, इवन पार्ट ऑफ नॉर्दर्न ओडिशा, मयूरभंज एंड अदर्स, दोस प्लेसेस आर हिली टेरेन, ट्राइबल पॉपुलेशन, हिली टेरेन, and a lot of shadow areas where the mobile telephony is not there. In our country we have the dubious distinction of having largest number of villages unconnected with mobile network. So that figure used to be about 10,500 in 2018-19. It has now come down to 6,000 last counted about 3 months back. Still it is the largest number of villages in any state which do not have any mobile connectivity. फॉर्चुनेटली लास्ट 3 वर्ष रो हम जो प्रयास करछु आ निरंतर रूप रे हमरो चीफ मिनिस्टर हमको एते सहयोग करछन जे जो कोनोसी बड़ मीटिंग को जायछन्ती मोबाइल टेलीफोनी आ इंटरनेट कनेक्टिविटी गोटे डिमांड हिसाब रे सब जगह रे प्लेस करा छै समस्त बड़ बड़ जगह रे आ तार फल स्वरूप आपण माने खुशी हेबे जानि कि एतो अजय बाबू कहिले हमरो भारत नेट विषय रे बट मु आगो प्रथमे मोबाइल टेलीफोनी विषय रे कहबी कारण 80% ऑफ आवर डाटा कंजम्पशन इज थ्रू मोबाइल. 3993 टा विलेज पई जियो को वर्क ऑर्डर मिल गला ओडिसा पे 7000 टी गां पे सैंक्शन हला मोबाइल टावर 3993 टी गां ताकरू केवल ओडिसा. सो इट इज द सिंगल लार्जेस्ट सैंक्शनिंग ऑफ वर्क बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट हैज कम बिकॉज ऑफ 2.5 years ऑफ अक्लांत परिश्रम जे एटा हमर सबुट बड़ रिक्वायरमेंट हमर बैंकिंग मिलुनी हम डीबीटी समस्त कहउचंती जो जैम फ्रेमवर्क जो थरे बैंक अकाउंट रही कि लोक को डायरेक्टली पैसा जीवो किंतु नेटवर्क जतले नै पैसा केमिति देखियो लोक केमिति नेबे तापर कोविड आसला जो द्वारा एजुकेशन केमिति अफेक्ट हला हम समस्त जानछि
तेणु एटा गोटे बहुत बड़ आमर उपलब्धि जे आम 3993 प्लस आउरी 480 माओवादी गाँ जो 480 फर्दर LW अफेक्टेड विलेजेस एटा जियो रिलायंस जियो को टेंडर अवार्ड हो जाइए। तेणु आम आशा करूँ जे नेक्स्ट वर्षक भितर आम प्रायतः मैंने 80% ऑफ आवर अनकवर्ड विलेजेस जी अच्छी आम कवर कर दे पारिबा मोबाइल टेलीफोन द्वारा। या परे भी आम कथा बहुत समस्त मीटिंग रे या बाद आमर 1500 2000 गाँ रही जाउची जोटा मोबाइल कनेक्टिविटी न मिल पारे आमको आश्वासन दिया जाइए जितेबाला वर्कटा चलो ताकू ही रिवाइज करके फर्दर जी गाँ रही से ऐड करदे। तेणु 2024 सुधा 24 शेष सुधा आम आशा करें ओडिशा रे प्राय समस्त गाँव मोबाइल टेलीफोन थी। आप भावत 2018-19 बेले 10,800 गाँ था जो मोबाइल नथिला। आमर टोटाल 50,000 गाँ 20% विलेजेस रे आमर मोबाइल नेटवर्क नथिला। तो यही जो अचीवमेंट एटा सेमती बड़ न देखा जाय पारे बाहर किंतु जेहेतु एटा गोटे बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ ऊपर समस्त अन्य सर्विस डिपेंड करछि एटा गोटे बहुत बड़ उपलब्धि बोली मु माने आईटी सचिव हिसाब रे आपण मानु कहउ चाहूँ। द्वितीय हला ब्रॉडबैंड जोटी महांती कहले ऑलरेडी दैट आमे समस्त जीपी को कनेक्ट कर दिछे बट से जीपी को कनेक्ट करे आमे सेठी रही जाइनु वी हैव नॉट सैट ऑन आवर लॉरिल्स। आमे आउ गोटे भी ताकू नेक्स्ट फेज को नवा पे जीपी ग्राम पंचायत रु विलेज को जीवो। आपण माने माने बहुत हुए जानिथिबे न जानिथिबे गोटे जीपी रे केतेटा विलेज थाए से जो रेशियोटा जे देखिबे ओडिसा हला वन ऑफ द हाईएस्ट। सो आम एवरेज हला 7 इन ईच जीपी एटलीस्ट 7 villages are there, whereas if you compare that with let's say state like Punjab or Haryana they have 1:1 each GP is a village. So amar GP connectivity pore भी broadband lot of villages should be there जोटे 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर गोटे पहाड़ आर पटे गोटे नदी आर पटे रही जीवो जोटी गाँ लोक पाइबोनी इंटरनेट। आम गोटे बड़ डीपीआर करछु जोटा थ्रू सैटेलाइट इमेजिंग नहीं की ताकू गोटे विस्तृत भाव में गोटे करके ऑलमोस्ट 4000 कोटी टंका गोटे प्रोजेक्ट वी हैव प्रपोज टू USOF जोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड अछि जोतरे सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट करछि ए कनेक्टिविटी जोगे दवा पे विच्छिन्नांचल मानकरे बहुत गुडे नॉर्थ ईस्ट जगह रे बहुत गुडे जगह रे होछि। तेणु सेटा मोर जेतुदूर विश्वास आमे जो एडवांस स्टेज रे अछु कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संगे बोध हुए नेक्स्ट 2 मास भीतर ए प्रोजेक्ट अप्रूव हो। ए जदि प्रोजेक्ट अप्रूव होला सेटा 3 वर्ष लागू कि 3.5 वर्ष लागू जदि कमिशन पे प्रति गाँ रे ब्रॉडबैंड केवल जीपी न। सो तेणु एटा हमर होला नेक्स्ट टारगेट हला एवरी विलेज विल हैव ब्रॉडबैंड एंड एवरी विलेज विल हैव मोबाइल कनेक्टिविटी। तो ए दीटा हला हमर मुख्य उद्देश्य जोटा हला आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लोक मानक पे दवा पे ता बेस रे हम बहुत सर्विस डिजाइन कर परबा। आज कृषक मानकर पंजीकरण नहीं कि लेबर मानक पंजीकरण है कि डायरेक्टली डीबीटी कालिया माध्यम रे पैसा दोचे बीएसकेवाई कार्ड जोटा बिजु स्वास्थ्य कल्याण देचे प्रति परिवार को 10 लाख टका लेके सेटा भी लोक माने स्वाइप करके मेडिकल कार्ड जानचंती तांको गोटे दरकार तांको कार्ड रे केते पैसा बैलेंस रहला क्रेडिट कार्ड मिलिया से गोटे कोड जाई देख परियो बोली। इंटरनेट रो रिक्वायरमेंट बहुत ही अधिका वर्तमान हो गलानी लोक मानक पे आ एटा हमर कर्तव्य जे हमें जेमिति हेले इंटरनेट मोबाइल हो एंड ब्रॉडबैंड हो दुईटा जगह में लोक पहुंचेगा। तृतीय मु देखुली आप लिस्ट रे हमर अशोक मीणा सर अच्छे सी कहे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को हम केमती स्ट्रांग करूचे इंटरनेट माध्यम रे गोटे पंचायत ऑफिस के सकाळ 10 रु नॉर्मली संध्या 5 जाए खोले आउ से लोक मैंने जाती बुझापी सेटा है ऑफिस गवर्नमेंट भुवनेश्वर सेक्रेटेरिएट नुहे पंचायत ऑफिस है सबकि किंतु पंचायत ऑफिस रे गवर्नमेंट टू सिटीजन जो सर्विसेस अच्छी से गुड़ाक डायरेक्टली अवेलेबल नुहे। बर्तमान आम सब 5T माध्यम सब ऑनलाइन कर पारे सेठी सब हो जाए कथा ता अर्थ जदि आम प्रति पंचायत रे सेमती गोटे कियोस्क गोटे ऑफिस खोलिबा जहाँ द्वारा जोटा आम खोलीचु बर्तमान मो सेवा केन्द्र ऑलमोस्ट 6000 मो सेवा केन्द्र राज्य में खोल सारे प्रति जीपी ऑफिस रे बर्तमान आम गोटे मो सेवा केन्द्र खोलिया जाऊँ जो पंचायत राज प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैज बीन वेरी काइंड कि गोटे स्पेस अलॉट करेंगे से खोलू 400 रु ऊर्ध्व गवर्नमेंट सर्विस सिटीजन मान कुआड़े जीवाक पड़ो जीपी ऑफिस मिल माने एमती सर्विस जोटा आप भाई पारे ड्राइविंग लाइसेंस दरकार
से लोक आरटीओ ऑफिस जावा पड़ता तांको जीवा दरकार नहीं से केवल से मो सेवा केंद्र ऑफिस को जीवे सेठी इंटरनेट रे से गोटे परीक्षा देबे से जो हमर 5000 क्वेश्चन अछि रैंडमली 10टा क्वेश्चन आसीबो जदि सेटा पास करि गेले 80% रखले ताल तांको प्रोविजनल लर्नर लाइसेंस तांको मिल जिवो तेणु एई प्रकार माने जे कोनोसी सुविधा आपण कहबे वर्तमान जो 430 टी हमर सर्विस हम ऑनलाइन करछु सब गुडी को ग्राम पंचायत लेवल रे ही अवेलेबल हे परिबा प्लस हम गोटे चेष्टा करछु गोटे प्रोजेक्ट वर्तमान एई वर्ष नबु बोली आगु जोते प्रति ग्राम पंचायत रे गोटे वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल सृष्टि करू प्रति जीपी रे 7000 जीपी रे ताले सेटा मल्टीपर्पस एजुकेशनल सेंटर भले यूज हे करियो धरंतु स्कूल पिला स्कूल जे परन तांको पाखरे निजर डिवाइस नै सी आसी सेठी पढी परिबे ता बाद धरंतु मिशन शक्ति रे हमें वुमेन मान को ट्रेनिंग दोचे वर्तमान आईटी ट्रेनिंग हो विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग हो तांको संध्या बेले क्लास नै परिबा तेणु जेते प्रकार हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करियो चाहूचे गाम मानकरे एबे डिजास्टर मैनेजमेंट ऊपर गोटे बहुत बड़ कार्यक्रम सरकार नबाकू जाउची जोथरे ऑलमोस्ट माने 10 लाख ऊर्ध्व लोकंकु डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग दियाजबो इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम सेतिर सब यूएन बॉडी समस्त को ता भीतर रोपिंग करा दिछि सेटा हमें चाहिले जीपी लेवल रे भी हम सेटा को डिसेमिनेट कर दे परिबा आउ जेमति हमें वर्तमान टॉपिक ऑफ द डे जोटा हमें आज डिस्कशन करछे डिजिटल लाइब्रेरी कंटेंट जोटा हमें धरंतु गोटे प्रकार हमें करछे हमर आईटी डिपार्टमेंट आउ कल्चर डिपार्टमेंट मिसिकरी जोटा ओभा गोटे तयार करछे ओडिसा वर्चुअल एकेडमी सेमती हमें वर्तमान जदि स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन होची 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन सेठी सबुटी गोटे डिजिटल लाइब्रेरी होची ताकू हमें यूनिफाई करू ताकू जोड़ी दबु ताले समस्त कंटेंट समस्त पाक अवेलेबल हो इस मेटा कंटेंट शुड आल्सो बी अवेलेबल एट जीपी ऑफिस इटसेल्फ तेणु जे कोनोसी पिला जे कोनोसी बेले चाहि कि किछि कोनोसी दिन से जानिबा को चाहिबो से एक्सेस टा से पाई परिबो एटलीस्ट डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस पाई परिबो एटा एबव माने ओवर एंड एबव द जो डिजिटल लाइब्रेरी नॉर्मल लाइब्रेरी कम डिजिटल लाइब्रेरी हमर कल्चर डिपार्टमेंट द्वारा तयार करा जोची ता बाद भी टेक्नोलॉजी जदि थरे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट जीवो एमिति हम यूज कर परिबा तेणु मु बहुत समय नेबिनी मु माननीय मंत्री को भी देखलिनी से जॉइन करनी अश्विनी पात्र सर मु एति कहि कि एठी रखबी जदि किछि क्वेश्चन थिबो आंसर करबी हम साथी मानकर जे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन रे हमें कोनोसी जिंस छाडू न मोबाइल कनेक्टिविटी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू विलेज एटा वर्तमान नुवा टार्गेट हम लेचु जीपी सरी गला वर्तमान विलेज को नबा आ मोबाइल कनेक्टिविटी 2024 भितरे प्राय सब बद्ध परिपक्व तेणु आम एटा करि पारि बोल लागुची एई द्वारा बहुत किछि ग्राउंड रे सिचुएशन चेंज हिजबो डिजिटल लिटरेसी टू आरंभ करके पिला मानकर स्किल डेवलपमेंट एवरीथिंग कैन बी डन थ्रू यूजिंग दिस डिजिटल इंफ्रा मु एति कहि कि मोर मु बंद करछि मु कहबा मंत्री सर को देखि परछि अछन सर नमस्कार ओवर टू मानदेव आपन को माइक इज योर्स Okay, thank you Manoj Babu for your wonderful address. And we know that you are a tireless worker, and we hope that the 100% panchayat and block level connectivity will be available very soon in Odisha, and we'll be really proud of that accomplishment of our government. Now a short video. I would like to invite our culture minister, Honorable Minister Ashwin Patra, to address this. He just became the minister about maybe last month. So welcome, sir. And we would like you to address the Public Library Act, and at least the libraries should be opened at every district level under your leadership. Ashwini sir, kindly unmute. Yes. Hello. Ashwini sir, kindly unmute, please. Ashwini sir, kindly unmute, please. Please unmute your mic, sir. Can you? Yeah, it's done. It's okay. Okay. So can you hear me? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Absolutely. Thank you. समस्त नमस्कार. नमस्कार. एभली एक सुजोग मिली आपण को प्रथमे धन्यवाद दउछि मु गोटे रिमोट रूरल विलेज रो आसीछि
गाँव रे मोर जन्म आओ गाँव रे मोर मध्य संपर्क लोकों साथी रे एवं ग्रामीण सभ्यता भितर आसिक मु विधायक हिसाब रे तापरे परवर्ती बजारे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक मते मंत्रिमंडल रे शामिल करजंती मासे पुरी को जाउछि एभली जो भेंचर आप माने नैचंती अमेरिका रे सुदूर अमेरिका रे रही करी आमे उड़िया हिसाब रे आप मानकर भेंचर को मु पूर्ण प्राण रे समर्थन करूछि एवं आपनकर ये बहुत उद्देश्य सफल हो आम राज्य पई ग्रामांचल पई मु सेति पई महाप्रभु श्री जगन्नाथ ठारे प्रार्थना भी करूछि मोटामोटी भावे आज दिन रे ग्रामीण लाइब्रेरी गोटे समय रे बहुत चलचंचल थिला आमे जतबे स्कूलिंग समय रे पाठ पढुथिले स्कूल रे सेते बेले ग्रामीण लाइब्रेरी चलचंचल थिला गाँव रो झियो बहु माने युवक बंधु माने जो माने गाँव रे रही चाषबास करचंती बा परिवार रे जो माने झियो बहु माने भात भात रांधि सारला परे फ्री थिले आसिकी बही नबा पढ़िबा ए कार्यक्रम ग्रामीण पाठागार रे चालू थाए हो थाए एबे ए टीवी जुगरे सेमानकर टिके आग्रह कमी जाउथबा मु परिलक्षित करे कारण मु स्कूल समय स्कूलिंग पर कॉलेज को पाठ पढ़ाई पाई गली आम गाँव रे निज गाँव रे छोट लाइब्रेरी थिला बहुत पुराना लाइब्रेरी थिला हमर जेठा बाबा माने ए लाइब्रेरी को चलै थिले तापरे मु देखिल जे लाइब्रेरी तो गोटे अच्छी बही बही किछि अछि आको आटे बड़ आकार को नबा तो विभिन्न समय रे सरकार पाखरु पैसा नबा आउ राजा राममोहन राय फाउंडेशन रु बही आनिबा ये गोटे बड़ निशा थिला सेते बेले आम मानकर खाली मोर नुहे विभिन्न ग्राम रे भी मु देखिछि जे ब्लॉक चेयरमैन थिला बेले कि ए लाइब्रेरी गोटे चलचंचल अछि सेठी आछंती खबर काज पढुचंती मैगजीन पढुचंती बही ने कि घर को जाचंती पुनी फेर रिटर्न कर दोचंती एभली गोटे चित्र देखा जाउ थाए मोर स्कूलिंग समय रे सेटा होची 67 65 पूर्व कथा कहूची तो एबे देखिबा को मिलुची जे से लाइब्रेरी गुडी को सेमती बंद बांध हे कि अछि आउ गाँव रो लोक माने टीवी देखिबा सीरियल देखिबा एते अभ्यस्त एते व्यस्त परिवार नै तो से जहाँ से समय परिवर्तन भितर ए लाइब्रेरी गुडी को आहरी आग को हमको नवा को पड़िबो एठी गोटे प्रसंग उठिला आलोचना रे कि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कि ब्लॉक स्तर लाइब्रेरी को रिवाइव करबा को पड़िबो एटा गोटे भलो प्रशंसनीय उद्यम एवं आको हबा दरकार जहाँ जन बंधु वक्तव्य रखुले 50,000 रु अधिक ग्राम ओडिशा रे अछि एवं ओडिशा रे एभली एक लाइब्रेरी आंदोलन को पुणी हमको रिवाइव करबा पड़िबो जोटी पढ़िबा पई आग्रह पिलांकर सृष्टि हबो स्कूल पिलांकर ग्रामवासींकर पो झियो मानकर एवं लाइब्रेरी सृष्टि एवं आग्रह सृष्टि हबा कथा अत्यंत आवश्यकता अछि एवं जो टेक्नोलॉजी व्यवहार करिया पे माननीय मुख्यमंत्री सूचना विपणे गुरुत्व दउचंती डिजिटाइज करबा पड़िबो मोबाइल नेट कनेक्टेड करबा पड़िबो एतरा आ टिके आग्रह आसीबो जानिबा पई कि पढ़िबा पई एवं आवश्यक पड़े केतले कोठी शहर रे रिसर्च करबा पई पाइबे इनफॉरमेशन पाइबे वर्ल्ड बेसिस इनफॉरमेशन पाइले सेमान रिसर्च करबा पई एवं सेमानकर निजस्व ज्ञान को विकास करबा पई मध्ये सेमाने सुযোগ पाइबे तो एभली एक उद्यम निश्चित भाव प्रशंसनीय मोर विभाग रे हमर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जे संस्कृति उड़िया लिटरेचर कल्चर साथी रे हमर संपृक्त अछंती विभाग रो मुख्य हिसाब रे श्रीयुक्त मधुसूदन पाढ़ी से तांकर वक्तव्य भी रखिचंती एवं मु सुनुथली माइन्यूटली कि से बहुत सुंदर भाव रे विचार करिया को जाउचंती एवं अन्यान्य विभाग सहित संपृक्त करिकी विशेष भाव पंचायत राज व्यवस्था भितर से आम एते सक्सेस करि पारिया पई पदक्षेप नबा हमर प्रशासनिक भितर जो व्यवस्था होउचिबा जो चिंतन रहिचिबा
माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुत नवीन पट्टनायक जो ड्रीम रही जे आम लाइब्रेरी टाकू आम से भाव चल पारे गढ़ी पारे शिक्षार परिप्रकाश हम लिटरेसी बढ़ो एवं भाषा प्रति से गोटे आग्रह सृष्टि हम अधिक भाव में कारण आपण मैंने जानी अनेक समय भाषा भित्तिक राज्य ओडिशा गठन है 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख रे भाषा भित्तिक राज्य गठन है परे ए भाषार प्रसार प्रचार यहाँ से समय बहुत जरूरत थिला एवं ग्राम लोक माने ओडिया भाषा रो ज्ञान अर्जन करबा पई ए ग्रामांचल लाइब्रेरी एटा गोटे तांको पारे उपादेय अनुष्ठान बोली भाबुकी कार्य भी मध्य तेना गोटे समय करूथिले से माने तो आज दिन रे इंटरनेट जोगरे एवं आमर जो जानिबार जो जिज्ञासा अच्छी जो आग्रह अच्छी तो सेथि पई समस्त को से दिगरे आम प्रयास करने को आगे नवा पाई आम जो चेष्टा करवा भावुची ओडिशा रे खूब शीघ्र ए गोटे नुआ रिनासा वा अभ्युदय घटी पारे घटी जीव मु जानी आम जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मधुसूदन पाढ़ी जे वक्तव्य रखले से जने बहुत प्रवीण प्रशासक एवं यथेष्ट ज्ञान तांको पाखरे अछि चाकरी जेते दिन अच्छी से सुजोग रे से किसी नुआ जिनस आनी पारिबे बोली समाज आग को आम समस्त सामना को आनी पारिबे बोली मोर से गभीर आत्मविश्वास अच्छी एवं जिला लाइब्रेरी को आम रिवाइव करवा तापरे ब्लॉक को जीवा सब डिवीजन को जीवा तापरे ग्रामांचल को जाइबा संभव हो पारे तेणु एभली एक प्रयास आप मैंने सुदूर अमेरिका रही करूँ आप मान को अनेक अनेक कृतज्ञता विभाग मंत्री हिसाब से आप मान सहयोग पाई मु वास्तविक बहुत अति आनंदित जे आप मैंने चिंता करचंती उड़िया भाषा विश्वस्तरीय सम्मान पाऊ एवं गोटे समय मुझे मोर निर्वाचन मंडली एकदम सीमार मिदनापुर जिला एवं झारखंड जिला सीमार झारग्राम जिला सीमार अनेक समय मु बेंगल जाए दीघा जाइए सेठी लेखा है बंगला रे विश्व बांग्ला तामने बंगाली मानकू सारा विश्व रे एकत्रित करिवा पई एभली गोटे तांकर प्रयास अछि बोली अनुमान कली मु से लेखारू आमे भी सेमती केबे विश्व ओडिया आमे हेई परिबा ए प्रयास हमको विश्व ओडिया आर रूपांतरण करि पारिबो बोली ए प्रयास को मु आशा रखुची स्वप्न देखुची एवं आप मानकर सहयोग चाहूँगी आम पाखे जहाँ संबल अच्छी जहाँ थट्स अच्छी जहाँ माननीय मुख्यमंत्री ड्रीम अच्छी ताकू कार्यकारी करने आम समस्ते उद्यम करवा जो कि ग्रामांचल सहित सहर सब डिवीजन जिला स्तर रे ब्लॉक स्तर रे लाइब्रेरी रिवाइव हो पार एवं चलचंचल हो पार ज्ञान भंडार गोटे वितरण हो पार समस्त को धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद सर वर्तमान आम गोटे शॉर्ट वीडियो प्ले करबा जाउछु आपन समस्त अनुमति नै कि Welcome to the Pasadena Public Library. Today we're going to take a short tour to show you what the library has to offer. Come on in. This is the circulation desk. First, get your library card. It's free and easy to sign up. Just bring in your government ID with your current address. Any resident of Texas can check out materials. The main library is located off Southmore, and Fairmont Branch is located off Fairmont. We have over 100,000 books to choose from, including historical fiction, romance, and mysteries. Our
nonfiction books include test preparation, biographies, arts and crafts, and medical information. We also have books available in Spanish and Vietnamese. Maybe you prefer digital books. We have you covered with thousands of ebooks and audiobooks available through Overdrive. Just download the app and you're ready to go. Want more? Check out our digital library for free music, popular magazines, and computer training. Ready for movie night? We have thousands of DVDs, including classics and latest blockbusters. Looking for family events? Pasadena Library offers free programs for kids, teens, and adults. Help your child prepare for school with fun, educational events. Teens can find a safe place to explore and learn. Adults can enjoy crafts, book clubs, and computer classes. Want even more? Come with me. We offer free notary service, faxing, scanning, and printing copier services. And we have over 30 computers available for the public to use. Stop by today to pick up your library card. Discover all the benefits Pasadena Public Library has to offer. Over to Ajay bhai. Nisikant bhai. We can hear you. Hello. Yes, go ahead, please. Namaskar. Namaskar. Honorable Minister Sri Pratara Achanti. Hello. ଅଛି Connect एठी माने दी वाईफाई कनेक्शन त डिस्कनेक्ट हे गला अपन टी जदी कंक्लूड कर दियंतु तापरे मु कंक्लूड कर देछि thank you again, and we hope the district libraries will be all revived in every district, and I am very hopeful because I am in touch with collectors from different districts, at least 5 districts, and I'm pretty sure this is going to be revived under your leadership. And one question I just Satyabrata Pandayati pacharithile, it's a very important question. Ame sena library karidaba apanଙ୍କର competent librarian darkar, jo mane they are well trained, they have to be technically qualified, internet savvy, who can guide the librarians. That is the role of the librarian in the current system. Okay, they are nahale se library kichi mulya nahi, je jibo library attend kariyako, they can guide the students, they can guide the public. ଆପଣଙ୍କର citizen centric services provided କରିବେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ मनोज बाबू, ସେଇଟାକୁ ବି ଆମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ. ହ୍ୟାଲୋ, କଣ ଚାଲିଗଲା ପୁରା? So we have to train people. Actually I visit Odisha a couple of times a year. से जो ट्रेनिंग टा हमको दବାକୁ पड़िବ. बहुत स्टूडेंट प्रोड्यूस होचନ୍ତି हमर very well qualified student. Librarians are going outside. So I would request Honorable Minister to look into this, that the librarians stay in our own state and they serve the district level and the block level library in our own state before they go away. So the employment opportunity should be for them. I know, personally, I know librarians, those who have gone to Andhra, because they serve there. You know, they study library science, they go. But we don't have librarians in many libraries. So with that, I mean, we'll come to the question answer session, but this was a very important question. I mean, librarians should be deployed in every model libraries at the district level right now, and then go to the block and panchayat level.
I would like to now request Mr. Ashok Meena, a very competent administrator, very well known. I had good fortune of meeting him many years. I don't know if he had joined. Prashant? Yeah, let me check. Ashok Meena? Ashok Meena sir not yet joined. I don't know if he is in another ID. Not yet joined. Not there? No. He said he could join. Okay. Okay, then we can go for question answer then. Yeah, I think we will go to question answer. If he comes back, then we'll let him in. One question was asked by Ramakanta Bhuya. Is he there? Can you unmute him? He can ask the question. Let me check. Ramakant, no. He's not there. Oh, he is there. Kindly unmute. Ramakant Bhaiya, you can come on the video. Kindly unmute yourself. He had raised. Yeah, please go ahead. Upon question the pacharanta apanangara. Unmute karantu. Unmute karantu. Hello. सर ओडिसा रे लाइब्रेरी ट्रेंड सब यूनिवर्सिटी रो पिला पास आउट होचंदी व्हेयरएज एबे गोटे गवर्नमेंट रूल करछन जे रिटायर्ड पर्सन को नौछंदी लाइब्रेरी ताल सर यूथ मास जो माने लाइब्रेरी प्रोफेशन पे आकर्षित हेबे से मान का भविष्य सर कोन हबो सेटा मो कल्चरल मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर को पचारची इस क्वेश्चन ता केमती they will be absorbed. जो गुड़िक से भाईना कहउछंती जे रिटायर पर्सन को रखा जाउची लाइब्रेरी हिसाब रे मो जानि बारे कॉलेज गुड़िक रे जो माने रिटायर करि जाउछंती किछि जगह रे एमटी रहिथिबे मैनेजमेंट रखिथिबे किंतु किछि जगह रे मैनेजमेंट तांको चेष्टा रे रिक्रूट करके लाइब्रेरियन को भी रखी दौरान तो दैट डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कॉलेज जदि गोटे कॉलेज रो स्टेबिलिटी अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी आउ से माने विदाउट डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट पेमेंट सैलरी अल्प के हो पछे देई पारिबे से सब जगह रे लाइब्रेरियन रखुचंती किछि जगह रे मो पार जा इन्फॉर्मेशन अच्छी तेणु exact number कहि परिबेनी केते रिटायर कले कोन कले because it is a part of higher education and secondary education +2 level तबे गवर्नमेंट लाइब्रेरी जो गुडी को थिला डिस्ट्रिक्ट लेवल रे से गुडी को रिटायर पर्सन को रखा जाऊ नाही प्राय म जानि बारे तबे मोते जो था आपन कहले जे मु भी ता लेट मी चेक दिस थिंग कि रिटायर पर्सन्स को डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी रे स्थान दउचंती चाकरी रखा जाउची अल्प किसी रेमुनरेशन दे करी से विषय भी अनुध्यान करा जिवो बाकी किछि जो माने को कॉलेज गुडा करे पोस्ट अप्रूव हेची कि मु भी तो किछि कॉलेज रे प्रेसिडेंट थिली सरकारी नियम अनुसार एबे सिना हमर प्रेसिडेंट आमे सब नाहु एजुकेशनिस्ट माने रहउचंती तो जते बेले मु निजे प्रेसिडेंट थिली किछि जगह रे आमे लाइब्रेरियन को नियुक्ति देइछु मैनेजमेंट तरफ रु पार्टिकुलरली मु जो पद प्रेसिडेंट थी जीबी प्रेसिडेंट थी तो से दृष्टिकोण रु देखा जाउछि जे नुआ लोक को लाइब्रेरियन हिसाब रखिया पाई जो कॉलेज इंटरेस्ट नौचंती बा जोठी स्कूल लेवल रे जोडा को गवर्नमेंट स्कूल्स बा +2 लेवल स्कूल्स सेकेंडरी स्कूल्स को आजिवो से माने लाइब्रेरियन रखि पारुछथि से सब स्थान रे बाकी गवर्नमेंट रिटायर पर्सन को रखिथिबा नकृता मो पास से खबर नाही बरम से कथाटी को हमर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शिवतम मधुसूदन पारी सठिकटा कहि परिबे जेतु से विभाग रो से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हिसाब रे दायित्व नै छथि thank you Shri Patra sir Niranjan Mahapatra has some question. He raised his hand. Okay, Niranjan Babu, can you unmute yourself and ask some constructive question, please?
नमस्कार समस्त को नमस्कार एक्चुअली मोर गोटे प्रश्न अच्छे जोटा कि ऑलरेडी तो किए कही गले जे मेसेज रे सर भी प्रभु सर कहते जे लाइब्रेरी प्रति आम दृष्टि दे गोटे लाइब्रेरी प्रति दृष्टि देवा दरकार जने लाइब्रेरी प्रोफेशनल हिसाब रे मोर गोटे प्रश्न सर को सर रिसेंटली आमर माननीय मुख्यमंत्री जो ड्रीम प्रोजेक्ट जोटा कि आमर आदर्श विद्यालय गोटे प्रोजेक्ट आ गोटे जो है 5T ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स जोटा कि सब बढ़िया खुशी कथा जहाँ गाँ गहली जो स्कूल पाठ पढ़ी आसुलु तार अवस्था कौन थी आज कौन है बहुत डेवलपमेंट है बहुत खुशी लगुच स्कूल गुड़ाक ई लाइब्रेरी मान प्रतिष्ठा है किंतु दुखर विषय सर से स्कूल मानक आज पर्यंत एक्जिक्यूटिव करने जड़े प्रोफेशनल लाइब्रेरियन आज पर्यंत कौन व्यवस्था करा जाए ना एवं आदर्श विद्यालय कथा यदि कह आदर्श विद्यालय भी विभिन्न फैकल्टी माने टीचर मान रिक्रुटमेंट होची पीजीटी टीजीटी किंतु लाइब्रेरियन रिक्रुटमेंट आज पर्यंत होई नाही जोटा कि आमे 2-3 थर आदर्श विद्यालय ऑफिस की जाई कि रिक्वेस्ट करथिलु हमर ओडिशा लाइब्रेरी एकेडमी तरफरु किंतु सेमाने कहले जे एटा हमर वर्तमान लाइब्रेरियन रिक्रुटमेंट एते जल्दी करा जिवो नाही प्रथमे बिल्डिंग तयारी होबो पिला माने पाठ पढिबे ताप लाइब्रेरियन होबो सर मु गोटे छोटिया प्रश्न मोर जोठी गोटे आदर्श नीति देखे कि आमे गोटे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन करिया को जाय कि आमे गोटे भलो इंफ्रास्ट्रक्चर को लाइब्रेरी तयारी करछे यदि स्टार्टिंग रुता मूल द्वार आमे गोटे प्रोफेशनल लाइब्रेरी न दबा से धीरे धीरे एमिति किछि काम भूल भाल हेइ जिवो जोटा कि परवर्ती काल रे ताको आमे सुधारिया को टाइम लागिवो सर आ विषय किछि मतामत करनु सर केमिति असुविधा को दूर करिवा केमिति गोटे स्टार्टिंग रे जो निरंजन भाई they got your question now Manoj sir you want to answer you okay sir Manoj babu you can unmute and you can give the answer please thank you sir मु आंसर तो सठिक भाव दे पारिबिनी कारण एटा विभागर अलगा प्रश्न एटा प्रश्नटा हला जोटा स्कूल मास एजुकेशन पे प्रश्न आमर जो टॉपिक टी अछि ता भीतर जदि प्रश्न पचारिबे डिस्कशन टी बेसी फ्रुटफुल हो किंतु मु जेतिकी जानि छि जेहेतु सुनुची मीटिंग रे थाइ कि सेतिकी मु इंफॉर्मेशन दबाक चाहूछि कारण एटा हमें गोटे माननीय मंत्री को भी गोटे विषम परिस्थिति रे पकुछि कारण तांको विभाग भी नुएटा से कहियो पे मु एतिकी जानि छि जे वर्तमान जो 6000 स्कूल रो हाई स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन होछि ता पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करि दिया जाय छि 6000 ना 8000 मोर मने पड़नी सबु शिक्षक लाइब्रेरियन इंक्लूडेड करी ताकू वर्तमान रिक्रूटमेंट प्रोसेस रे अछि आपण माने जानिथिबे जे सबुटु अधिका हम राज्य रे सरकारी कर्मचारी हले 7 लाख सेथुर सबुटु अधिका हले टीचर्स 2 लाख तनो ए नहे जे रिक्रूटमेंट हेनी विभिन्न प्रकार रिक्रूटमेंट हेछि किंतु तेटा वर्तमान स्ट्रक्चरिंग जोटा जेमति चेंज होछि जेमति समय चेंज हेलानी वर्तमान डिजिटल लाइब्रेरी दरकार पड़लानी सेही लोक माने जो शिक्षक माने अछंती से माने वर्तमान कॉम्पिटेंट नोंति पढिया छै तेणु तार रिक्रूटमेंट जोटा करिया को जाउछि वर्तमान सेही रिक्रूटमेंट हेले मते लागुछि जो कंसर्न आपन कहउछथि जो माने लाइब्रेरियन एठी अछंती पाठ पढि के बाहर को जाउछथि सेटा तार आवश्यकता पडिबोनी बोली लागुछि कारण सेते लाइब्रेरियन हम प्रोड्यूस करबे जे 6000 स्कूल पई हम जदि रिक्रूटमेंट करे ता पर भी हम बाहर को जाउ पड़िबो सेटा मोने कॉन्फिडेंटली एती कहि परिबि जे हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस ता मैच करा जाउछि इंफ्रास्ट्रक्चर संगे यदि इंफ्रा आसिला पूर्व रिक्रूटमेंट करबा सेटा होछि इंफ्रास्ट्रक्चर्स एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट लाइब्रेरी नाही लाइब्रेरियन कोन करबे स्टूडेंट नाहंती लाइब्रेरियन कोन करबे तेणु इंफ्रास्ट्रक्चर विल हैव टू प्रिसीड तेणु आम काम हला वर्तमान जोटा 5T रे अधीन रे करा जाउछि से टाइमिंग को मैच करा जाउछि हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस 1 ईयर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस 3 इयर्स तेणु आग 2 वर्ष पूर्व कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रिक्रूटमेंट ठीक टाइम रे तार हो तेणु जो कंसर्न टा इट इज अ वेरी लेजिबल वेरी इंपोर्टेंट कंसर्न दैट लाइब्रेरियन पर नियुक्ति न रहिले सेटा सेतिकी डिसेमिनेट हे परिबो नाही जेतिकी हम चाहू जे तार यूज हे परिबो नै बट हमें ए जिंसटा मु जेतिकी मीटिंग रे देखिछि जे एटा की कंसर्न टा ऑलरेडी एड्रेस कर दिया जाइछि मु एग्जैक्ट नंबर कहि परनी कारण से विभाग में देखुनी बोली बट आपण मन निश्चित रहजु जे ए लाइब्रेरियन रिक्रूटमेंट इज ऑलरेडी ऑन द टेबल एंड गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स ओन एक्शन thank you sir Ajay bhai you can take questions from the chat box and you can ask sir बढ़िया क्लियर कले जे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे 3 वर्ष लागियो the librarian गोटे रिक्रूट कर पे गोटे वर्ष लागो so we इट हैज टू प्रोसीड द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू प्रोसीड
One question was asked by Mr. Kishore Satpathy, Chief Librarian, Indian Statistical Institute, Calcutta, is one of the most famous institute. They have an excellent library. I have visited that. Thank you, Kishore Babu, for asking this, not making a comment, that he is making this comment that at least it's high time that we should network the existing libraries, at least for better networking. Yeah. So I would request Mr. Manoj Mishra to address this. Let's say Mahatab Library in Bhubaneswar. Is it connected to other district library, or is there a plan to connect? Because Mahatab Library is a very good library and a resourceful library. So can I ask you this question, sir? Yeah, you please unmute. Yeah, please unmute, sir. Manoj. Yeah. This question has different facets. Connectivity meaning pratham digitization of the library. Once the library is digitized and the infra is available in the other libraries, then only it can be connected. So today, I am not sure about the Mahatab library with the district library connectivity, but I know that when we are talking about Adarsh Vidyalaya libraries, we are talking about 5T school transformational libraries. We plan to connect all of them and make a central repository library. So that is what in my speech also I told, that amar jemti OBA अछि sei bhaliya gote central library he paribo jota samaste jo konar bi rahibe internet access thibo jodi tankara they will be able to access the library. But digitization of library bartman bahut gude bartman chalichi. In fact our department bi setere bahut agavara hai ki almost ame 3000 bohi important bohi ko library manakuru hi taku digitize korchu. So digital library availability ta ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବା ପ୍ଲସ୍ ଯେତେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡେ ବହି ଅଛି ଯୋଉଟା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଥିବ ଆଉ କୋଉଠି ନଥିବ, ତେଣୁ ସେଟା ଡିଜିଟାଲ ହେଇଗଲା ପରେ ହିଁ ସେ କନେକ୍ଟିଭିଟିର ୟୁଜ ଆସିବ. I think that question is very relevant. I think if you go to US, you will find that most of the universities are connected because in infrastructure they are at that stage. We will possibly take a little more time, but that is definitely coming. So among us now, Ashok Meena sir is there. Ajay bhai, now please. Yeah, I'm extremely sorry. Actually, I was just traveling. I told Nishibabu also that because of this travel, I was not able to get the connectivity in between. I can actually speak only about the Gram Panchayat initiative that the state government is taking. And as we heard Manoj is also working very closely with the Panchayati Raj department to provide the connectivity to the Gram Panchayat level. So the vision of the Panchayati Raj department for the Gram Panchayats is something like this, that we need to ensure that every Gram Panchayat has a reading room cum library. And going forward, it should also have multimedia facilities along with a high-speed internet connectivity. So high-speed internet connectivity is the area where Manoj is helping us through Bharat Broadband optical fiber to be reached to the Gram Panchayats. But reading room cum library is what we are encouraging all our Gram Panchayats, and there is a plan to saturate every Gram Panchayat to have its own reading room cum library, which should be available to all the people from morning till evening. The problem that we were facing in the Gram Panchayats was that they don't have their own staff to run these kind of facilities. So recently, Government of Odisha has also taken a decision that every Gram Panchayat will have a data entry operator cum accountant to ensure at least the Gram Panchayat office remains open during the day. So taking this as a cue, probably it will be now possible for us to saturate all the Gram Panchayats with a reading room cum library. I would just like to share with you that even without our intervention, since a lot of funds are available at the Gram Panchayat level, some of the districts have done a lot of innovations in providing the reading room cum library, particularly, for example, in Kendrapada district, and Ganjam district has gone even further, and their reading rooms and libraries are quite
attractive in quite a few Gram Panchayats. That is the model which was shown to all the member of Legislative Assembly MLAs who were taken to the Gram Panchayat in the Ganjam district and shown how libraries and other infrastructure in the Gram Panchayats can be created through convergence model. And that is the kind of model that we would be replicating all across the state of Odisha. The idea is that the Gram Panchayat should become a vibrant place where reading room facilities and library with the donation of books, etc., as well as they also have their own resources. They should develop that. And once the multimedia facility is available, these libraries will also become places where marginalized section of the people, the students particularly, can get access to the online education. Otherwise, this marginalized section of people do not even have the access to the online education in their villages. So that is the idea I wanted to share with you, with the organizers, and I am thankful to all of you to give me this opportunity. And sorry for my not being able to join you earlier. Thank you. Thank you, Sri Meena. Thank you for coming, and we really hope under your leadership that Panchayat libraries will go to greater heights. I fervently hope, there is. I actually go to India, Odisha, a couple of times a year, and I see the transformation. And in my own village and one Panchayat, actually they were having an Ramlila. And they came and they said that, you please come address the Ramlila. And it was in front of a library, which was there in my childhood. I said, next year, by the time I come to Ramlila, I want to see this library to be open. And they went to the BDO next day, and he's a dynamic person in our area, and the library will be built. He has granted that permission that the library will be built. So such is the, we have to mobilize the youth in our Panchayat, every Panchayat. Just like there is a road, Panchayat, Grama Sadaka. So every Panchayat should have, their library, their meeting room, their citizenship service being provided. And it's a dynamic vision, that Manoj Babu painted, you painted. And we hope to see that reality in the next 4 or 5 years. That's what we are facilitators. We cannot execute or implement there. Thank you so much. Nice to see you, Ajay Babu. Thank you. After a long time, I think I met you around 15 years back in your house. To George Washington University for your training, and it was a great pleasure. I mean, it's so nice to be connected to you again. And so basically, I think Manoj must also have shared that every Gram Panchayat we are going to saturate with a couple of basic amenities. Number one is that every Gram Panchayat will have a Mo Seva Kendra. It's basically an electronic service delivery point, which is run by a local entrepreneur, and that makes all the services available to the rural people in the Gram Panchayat office. That is number one. The number two thing which I was talking was about the reading room come library with a multimedia facility. So it doubles up as a reading room for the general people, but also available to the students for taking advantage of the online education, which is becoming almost a default thing for quite a few courses. And particularly poor people can take those facilities because they don't have the digital devices available to them. The third thing we are also insisting is the banking correspondent to be available in each Gram Panchayat. Now, if all these things have to materialize, we need to also strengthen the Gram Panchayat so that they remain open. Right now, the number of people who are working and available in the Gram Panchayat is very limited, and we are thinking that we actually hope that the sarpanches on their own will be able to run the GP, but that doesn't materialize. So therefore, the state government has recently decided
that in addition to the Panchayat Extension Officer, which those posts will be filled up, apart from that, one more post is being created of data entry operator cum accountant to ensure that the Gram Panchayat office remains open every day, just like a government office, so that services can be made available at the Gram Panchayat level. So that is the larger vision that we are working towards. And I spoke to Mr. Nisikant Babu. We'll also be issuing a master circular in that respect, particularly relating to reading rooms and libraries. So that's what I would like to share with all of you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Excellent point about reading. One question was asked by video. No. You want to say? Okay. You can. Thank you, Ashok Babu, for attending. Really appreciate. One got a general question thila che if we can have all the libraries under one administration, that would be very much helpful. Can a libraries rohuchi, culture department, libraries rohuchi, IP Act department, Panchayat Raj department. Tenu kiye kar ownership nebe sita time got a border challenge rohuchi. Tapar IT tenu apunko help the if you have some clear guideline who should own which part. Can I do MGNREGA scheme? It's a very powerful scheme, one of the successful scheme in the world. Then start that is commendable. Then how we can define who should take what kind of ownership. Effectively implement already Karnataka has been successful in implementing digital libraries in all over the state and in all GPs. By 2024, how we can achieve this thing? Not this because we cannot cover everything today. We request you how we can discuss on this thing going forward, so that we have regular, like in a monthly basis, we can discuss like what can be achieved and where we can help. Even we are also interested like more library project, so that even we can contribute, we can help also. And we want to support unconditional with no conditions to go to the next level. Can I just limit this discussion to this seminar? We want to see like how we can improve like every month, every quarter, so that we can reach this goal by 2024. Because this rule has been passed like in 2001. With 5T, we expect and we request your help that how we can achieve this goal by 2024, that we have GP libraries, internet enabled GP libraries in all over Odisha. Advice how we can proceed. We just don't want to limit to this session because we cannot have all kind of discussion today. And I'd like to introduce Sandhi Dasbagma to say a few one how we can accomplish. What was your question? Let him answer first. Okay. Please go ahead. Yes. I think this is a question to all of you. No, because this, I am unmuted already. No. No, not unmute. Still unmute. Okay. Can you hear? Nisikant bhai, yeah, we can hear. Who is answering this question? Okay, I think his network has gone. Nisikant bhai ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଗାଁ ଗହଳରେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହଉ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ପଦ କହିବି, ଯଦି ରାନ୍ଧୁଣିଆଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ଦରକାର ତାହେଲେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଥିବାର ଅଛି। ହୋଟେଲ ସେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆମର ସ୍ଥାପନ ହଉ, ତାପରେ ଯାଇ ସବୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଯଦି ଲାଇବ୍ରେରୀ ରହିବ କୁଆଡେ ଯିବେ ସମସ୍ତେ? ଏବେ ଯେଉଁ ଜାଗା ସବୁ ଖାଲି ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଏଟା ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆମେ ଜାରି ରଖିବୁ।
जदिव आम 7 समुद्र 13 नई एपार बसीचु 15,000 माइल दूर रे मनरे ओडिशा को धरिकी चलीचु आपण माने किए भी निराश होंतुनी समस्या अच्छी समस्या भितर जुझिबाटा ही आमर परम कर्तव्य आम मनीष ही अच्छे तेणु मुझे समस्त अनुरोध करी आपणकर समस्त प्रश्न आम सब संग्रह करूँ संग्रह करी आम प्रत्येक अधिकारी को से प्रश्न सह आम आलोचना करूँ किंतु पुणी समस्त अनुरोध करूँ आम किसी व्यक्तिगत प्रश्न किंबा पाठागार बहिर्भूत प्रश्न किसी पचारतुनी आमर जदि धन्यवाद किशोर भाई धन्यवाद सत्यव्रत धन्यवाद निरंजन भाई विश्वबाग आपण मानकर प्रश्न आम सब ग्रहण करुछु आम टिपिकी रखुछु तार समय और सुजोग नहीं स्थान काल पात्र देखी आम निश्चय से प्रश्न समस्त उपस्थापन करूँ तेणु आपण मानकु पुणी थे कही दउछि किछि यांत्रिक त्रुटि पई वर्तमान अजय भाईंकर ये कटि जाइछि तेणु आसंतु एई भितरे आम टिके आगो को जीवा आपण को किछि लाइब्रेरी रो मु देखै दउछि मु अपेक्षा करछि समानकर आसीबा पई Ever since the invention of writing over 5,000 years ago, there's been a need for places to store texts. As a consequence, it took long before the first libraries were built. Over time, however, these structures evolved into something far greater than just utilitarian storage. From wealthy rulers to institutions and private patrons, many over the centuries have emptied their coffers to make libraries that are true works of art and serve as celebrations of human knowledge in marble, gold, and stucco. Although there are too many to cover them all here, in this video we'll look at 10 of the world's most magnificent historical libraries. Constructed in the lavish Rococo style, our first library is located in the Abbey of St. Gall in Switzerland. Having been founded all the way back in the 700s. Hello guys, it's Will Get It. Today's video. Hello? मु सेतमे गोटे वीडियो प्ले कर देजी मने जल्दी सेरा होबो Hello. Hello. Yes. हाँ प्रसन्न जी हाँ बंद कर दियो एबे हमको अलाउ करो हाँ अनिल भाई अछन अनिल सेपटे अनिल को फोन ठीक है ठीक है अनिल को ये फोकस कर कौन Hello. This is Sandeep Das Verma. I want to leave a few closing comments. One is that after all this, we should be able to have every kid read at least 10 books a year. And the highest is 45, Israel.
All European countries are more than 30. India is 1.1 and Odisha is probably 0.5. So how can we reach that? And without that, all we are trying to provide is access. In addition, I think we should encourage kids to read books, and that should be a criteria which should be awarded with an annual competition in every district or every block. And I am sure we can not match the government funds that Odisha has now that we have got the, mining rights and all that, mining royalties. But we definitely can set the sample, and that is what we have been attempting to have rural and urban libraries which are model, international models, so that which can be replicated everywhere. We would request you to have 2 rural libraries and 1 urban library in every district by next year, and by 74, just spread it around to every block and every panchayat. And I would request that please let us have at least a meeting every 2 months so that we exchange the progress, and we know what is the progress and how we can assist. Thank you for spending your time on this, beautiful morning. And of course, for you, it is evening, Saturday evening. So, and let us hope by next year we'll have a significant progress. Again, thank you all. Chadiyo. Chadiyo. Oh, thank you. Thank you all. Thanks. Prashanta? Yes, sir. With this, we are closing this one. Yes. Yeah. You can leave the meeting. And yes, समस्तଙ୍କୁ धन्यवाद। वर्तमान हमरा सभा में सारुचु आपण मानकर जहा सब वार्ता आमे अधिकारी निकटरे पहुंचाइबु, पुणी थरे आपन मिसिबु। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू। केते अछि? तुमको भी धन्यवाद। 50 सम केते लोक वाच कले? टॉप रे 58 थिले। हां 58 माने लाइब्रेरी के 58 जाति। यथेष्ट